हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। सबको नमस्ते। आज का डेट में लॉकडाउन शटडाउन बहुत सारा चीज़ अभी देश में चल रहा है। इसी में मैं पुरंदर पंडा एक प्रयास करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो उनको कुछ जैसा कि ICSE, CBSE, +2 साइंस स्टूडेंट, ये लोगों को बहुत सारा चीज़ डिफ़िकल्टी होता होगा याद रखने में। एग्ज़ाम का वो जो केमिस्ट्री वगैरह जो है, लॉ वगैरह, उनको समझने में दिक्कत होता होगा। तो मेरा एक तो प्रयास है कि इसको थोड़ा साधारण वे में कैसा समझा सकूँगा, सो दैट सब स्टूडेंट लोगों को इजीली याद रहेगा और एग्ज़ाम पेपर ठीक से लिख पाएंगे। उसी में मैं कवर करूँगा बहुत सारा चीज़। बट एज ए बिगिनर पहले स्टार्ट करते हैं कुछ लॉ वगैरह, जो कि गैसीय स्टेट केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट में क्या होता है, बहुत सारा लॉ रहता है, जैसा कि बॉयल्स लॉ। मैं यहाँ कुछ समरी लिखा हूँ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, गैस इक्वेशन। तो बिगिनिंग में क्या रहता है, सब स्टूडेंट लोगों को ये डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ है, ये सब को कैसा याद रखेंगे, कैसा पढ़ाई करेंगे, तो एग्ज़ाम में लिखने में उन लोगों को ईजी रहेगा। तो मैं अभी क्या समझाना चाहता हूँ, ये है आपका समरी। जैसे कि बॉयल्स लॉ, रॉबर्ट्स बॉयल्स गैस के बारे में क्या लॉ डिस्क्राइब किए हैं या स्टेट किए हैं। जैसे कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा एवोगाड्रोस लॉ में क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर दिस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस। Just like Graham's law of diffusion, rate is directly proportional. Rate of diffusion is inversely proportional to square root of density of a gas at constant temperature and pressure. And gas equation PV by T is constant. What is P? P is the pressure of a gas, V is the volume of gas, T is the absolute temperature. So ये जो इक्वेशन है, ये समरी है, इजीली याद रहता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं एक एक करके सबको समझाना चाहता हूँ, सो दैट वो स्टूडेंट्स लोग जो बिगिनर्स रहते हैं इजीली एग्जाम पेपर में लिख पाएंगे, याद भी रहेगा। ऐसा आगे भी बहुत सारा चीज़ मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। फर्स्ट है बॉयल्स लॉ, जो कि रॉबर्ट्स बॉयल्स। व्हाट ही स्टेट रिलेशनशिप, इट स्टेट्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हियर एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of given mass of gas is inversely proportional to pressure, means V is inversely proportional to pressure. What is inversely proportional? P is the pressure of a gas. If pressure increase, volume will decrease. If pressure decrease, volume will increase. This is the law of Boyle's-Roberts. So suppose at constant temperature, suppose at T1 degree centigrade, volume of gas is V1, and at T2 degree centigrade, volume of gas, suppose volume of gas is V2, and pressure is P1. At T2 degree centigrade, volume of V2 is the gas volume at pressure P2. Okay, but here what Boyle's law define? Constant temperature, means suppose T1 T2 degree temperature is constant, means V1 is inversely proportional to P1, V2 is inversely proportional to P2. Okay, this is suppose equation 1, this is suppose equation 2. This means that P1 V1
is equal to constant, where so at constant temperature you can write like this: P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to, suppose at temperature T pressure is Pt and volume is Vt. So P1 V1 P2 V2 is equal to constant. This is the, simply we can write this P1 या PV is equal to constant. So this is Boyle's law of gas. Okay. And the summary, what summary you get? That at constant temperature V is inversely proportional to T. So you can write like this: P1 V1 is equal to P2 V2 at temperature T. Suppose pressure is T and volume is T, then Pt Vt is constant. So almost Pv is constant. This is Boyle's law. Okay. Now let us go to Charles' law. What Charles' law state? Charles' law, the relation between volume and temperature. Volume of a given mass of gas rise or falls of volume of a given mass of gas rise or degrees of pressure at constant pressure. Volume is directly proportional to temperature. This we have to derive. But it states that at constant pressure the volume of given mass of gas increase or decrease by 1 by 273rd of its volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise in temperature. This means suppose at 0 degree centigrade, suppose volume of gas is V0. At 1 degree centigrade volume should be, according to Charles' law, volume should be V0 plus V0 times 1 by 273rd. Suppose at 2 degree centigrade, what will happen? V0 plus V0 into 2 degree by 273rd. Like this, suppose T degree centigrade, V0 is the volume at 0 degree centigrade. Okay. Then T degree centigrade, what will happen? V0 plus V0 into T degree centigrade divided by 273rd. Simply we can write that this is volume at 2 degree centigrade, volume at 1 degree centigrade. Okay. This is T degree centigrade. So directly we can write that at T degree centigrade volume Vt is equal to V0 1 plus T degree divided by 273 is equal to V0 273rd plus T degree centigrade divided by 273rd. Here in this equation, suppose but is equal to V0, we can write like this: V0 into T by 273rd. What is T? So here you can write that T is the absolute temperature. T is equal to 273rd plus T degree centigrade. This is the absolute temperature. Okay. So here you can, this V0 by 273rd, this is a constant. Okay. Then you can write at constant pressure Vt is equal to K, constant into T, means Vt means volume of gas V is directly proportional to T. This is the derivation of Charles' law. V is directly proportional to T. So from this equation
finally what we have described, that at constant pressure volume of gas is directly proportional to T. So like this you can derive. In exam just you have to remember all this summary, and from this summary you have to describe all these things to write in exam finally. Okay, so today student, these two, Boyle's law and Charles law, we have described. In next section we will discuss Avogadro's law, Graham's law, diffusion, gas equation, all these things. But just in first class I will describe you some tips. What Avogadro's law? Avogadro's law, similarly volume of gas is directly proportional to number of mole of gas. Graham's law, rate of diffusion is inversely proportional to square root of density of a gas. Finally, we will derive gas equation. What is gas equation? Gas equation is all this pressure, volume and relationship between pressure, volume and temperature. So, PV by T is equal to constant. This we will divide. Thank you, student.